इन द नेम ऑफ़ अल्लाह द मोस्ट बेनिफिसेंट द मोस्ट मर्सीफुल। आई एम प्रोफेसर अमीर, अल्लाह के फजल से ठीक हूँ और उम्मीद है कि आप लोग भी ठीक होंगे। आज मैं आपको ट्रांसलेशन ऑफ सेंटेंसेस पार्ट 1 का एंड जुज़ पढ़ाने जा रहा हूँ। ट्रांसलेशन फ्राम उर्दू टू इंग्लिश। पहला सेंटेंस है कि सुस्त लोग कोई भी काम ठीक से नहीं कर सकते। लेज़ी पीपल कैन नॉट डू एनीथिंग प्रॉपरली। नंबर 2, वो कई काम किसी न किसी बहाने छोड़ देते हैं। दे गिव अप मैनी थिंग्स ऑन वन प्रीटेक्स्ट और द अदर। वन प्रीटेक्स्ट, प्रीटेक्स्ट यानी बहाना, और द अदर। नंबर 3, बुनियादी तौर पर वो कोई काम करने के लिए आमादा नहीं होते। बेसिकली दे आर नॉट विलिंग और दे आर reluctant to do anything. They are reluctant to do anything. Basically, they are reluctant to do anything. नंबर 4, उनकी सुस्ती की वजह से उनको अक्सर ज़िंदगी में नाकामियाँ पेश आती हैं। They often meet failures. Often or often, you can say, meet failures. They often meet failures because of their laziness. अपनी सुस्ती की वजह से उनको अक्सर नाकामियाँ पेश आती हैं। नंबर 5, इसके बरक्स चुस्त लोग काम करने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। ऑन द contrary or contrary to that, active people, चुस्त लोग, are always ready to do things or to do work. नंबर 6, वो फ़कत फ़ारिग बैठकर अपना वक्त ज़ाया नहीं करते। They do not waste their time. They do not waste their time just by sitting idle. Just by sitting idle यानी फ़ारिग बैठकर अपना वक्त ज़ाया नहीं करते। नंबर 7, वो अपने मकासद तय करते हैं और अपनी कोशिशों से उनको हासिल करते हैं। They set their targets and achieve them by their efforts. नंबर 8, कामयाब लोग औरों पे इन्हिसार नहीं रखते। सक्सेसफुल पीपल do not depend on or upon others. Okay, do not depend on others. वो औरों पे, कामयाब लोग औरों पे इन्हिसार नहीं रखते। नंबर 9, वो अपनी मुसलसल और सच्ची कोशिशों में यकीन रखते हैं। They believe in their continuous and sincere efforts. नंबर 10, आखिरकार वो अपने मकासद हासिल करने में कामयाब हो जाते हैं। फाइनली और अल्टीमेटली they succeed in achieving
in achieving their targets or their goals. I think these sentences are useful to you. If you find them useful, like this video, subscribe my channel, and do comment in the comment section to let me about